Hi friends, very good morning to all of you. How are you all? क्या हालचाल? Yes, exams are coming nearer. कितना time बाकी रहा? Oh, March almost over. April and half May. It's kind of 1.5 months. Yes, 1.5 months left for your examination. 15 days extra for completing exams. तो 2 महीने. 2 months are left for your preparation. ही जान लगा के मेहनत कर दो यार. These are the last 2 months. Ensure you are working to your best. Every day should go in a manner कि आप satisfied हो अपनी effort से. Again, I'm telling you, you don't have to satisfy anybody else, but only you. Make sure every day of yours you are satisfied with your efforts and रात को सोते time you have a smile on your face. Yes, आज का target मैंने achieve किया and then I'm going to sleep. चलो, now today's class is about MCQs. In your subject of auditing, CA Inter Auditing, 30 marks is MCQs. Total 44 marks objective है, 14 marks is correct incorrect, 30 marks is MCQs. Last Sunday हम लोगों ने एक session किया था, that was a special session related to correct incorrect. Correct incorrect, already we have done one session. This session we are going to do MCQs, 30 marks. And एक चीज याद दिला दूं, MCQs are always based on the content of the chapter जो हमने कर लिए. So sir, as a student, can I directly study MCQ first? क्या लगता है? As a student, should you directly study MCQ first? Never. सबसे पहले you finish up your studies of the normal chapters. तो सारे chapters आप पहले finish कर लो. Be thorough with your chapters and उसके बाद आपको MCQs करने हैं. If you directly go to MCQs, you are trying to mug up the things. फिर आपको पता नहीं चलेगा. So always better पहले finish करो सारे chapters. उसके बाद you go on for MCQs. Now, before I start today's session, let me just bring you to your notice the price hike which is going to come at Unacademy. Yes, we are going to have a price hike of around 25%. So please make sure you or any of your friend needs a subscription to take it very fast. You can use the code Yeshas Live or you can use the code Yeshas. Yeshas or Yeshas Live, you can use the code and you can save up to 25% of your money. Today, after our session is getting over 12 baje, we have a mega combat. Yes, today at 12 o'clock we have a mega combat जिसके अंदर you have a small test, MCQs type. So 40 questions, 60 mark का एक test है, वो test लिखो and you can win lots of prizes. Yes, even a scholarship up to 100% is available. Plus you have Apple iPad if you want. So mega combat today, after our session is completed at 12 o'clock it is starting. And we have two types of program at Unacademy. एक होता है plus subscription, दूसरा होता है iconic. Under iconic subscription, extra advantages. What are the benefits? Under iconic, you get a physical material. Plus, we assign a mentor to you ताकि you are motivated, you are pumped up to work. The 1:1 mentorship program is there. Evaluated test series. So under iconic program, we have an evaluated test series. We will not just give you the test paper, we'll also evaluate your test papers as well. You can take up our subscription, either a plus one or an iconic one. Use code Yeshas, YESHAS or Yeshas Live. You will get a special discount. And please enroll before the price is hiking. Very soon the price are going to hike, so ensure you or your friends are subscribing. चलो start करते हैं today's work. We begin with today's work, MCQs. Now, MCQs दो type के हैं. One is a normal MCQ. दूसरा है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू. रिपीट, एक नॉर्मल एमसीक्यू है, दूसरे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू. सर एग्जाम में क्या आता है? दोनों. तो इन योर एग्जाम नॉर्मल एमसीक्यूज आर आल्सो देयर, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी है. आईसीएआई ने एक बुकलेट दी है. रिपीट, आईसीएआई हैज गिवन यू अ कंप्लीट बुकलेट व्हिच इज ऑन एमसीक्यू. तो व्हाटएवर एमसीक्यूज जो हमारे मटेरियल में है, दे आर फ्रॉम द आईसीएआई एमसीक्यू बुकलेट. Repeat, ये जो MCQs यहाँ पे है, they are nothing but from ICAI MCQ booklet only. But हाँ, मैंने mark किए हैं which are the important points. We will not be discussing each and every MCQ, but हाँ, we'll be discussing all the important MCQs which are there. तो जो important है, marked it as important. अच्छा सर, ये material कहाँ से? The material of yours, where do I get it? One option is if you go to the chat box starting में ऊपर. If you go to the chat box starting में ऊपर, there's one of my message wherein I have shared the link of material. Second option, we have a Telegram channel.
हमारा टेलीग्राम चैनल है CA निकेत ठक्कर, तो आप वो टेलीग्राम चैनल में जाइए. इन दैट टेलीग्राम चैनल वेर एवर यू फाइंड लिंक ऑफ मटीरियल, ऑल लिंक्स लीड टू द सेम थिंग. तो मेरे सारे मटेरियल एक ही लिंक में है. इंटर का मटेरियल, फाइनल का मटेरियल, एवरीथिंग इज जस्ट इन वन लिंक. इफ यू गेट दैट लिंक ऑफ मटेरियल, क्लिक ऑन दैट. आपके इंटर के अंदर go to the CA Inter paper 6 and you will find out MCQs. Actually full material of auditing is available in case anybody wants it. ठीक है. Now chalo, let's begin. We start with some normal MCQs and then we'll go to case study based MCQs. पहले normal MCQs, फिर case study based MCQs. We'll just do which are the important, whichever are ticked. Coming to MCQ number 1. Coming to MCQ number 1. Dash along with other disciplines such as accounting and law. Dash along with system and down. Next one. Okay, fine. Okay, we are doing question number 1. Dash along with other disciplines such as accounting and law equips you with all the knowledge that is required to enter into auditing as a profession. Auditing, taxation, finance, law. I want to answer fast. Dash along with other disciplines such as accounting and law equips you with the knowledge that is required to enter into auditing profession. This one with chapter number 1. Enter into auditing profession dash the discipline of accounting and law are required. Now, see, there are few MCQ तो इतने easy नहीं होते हैं. We can't answer it very simply and that's why उसको मैं important mark कर लेता हूँ. यहाँ पे the answer will be A, auditing. तो भैया पहले तो आपको ऑडिटिंग का ही नॉलेज चाहिए. Auditing knowledge along with accounting and law का knowledge that will help you in the field of auditing as a profession. Next one, question 2. No business can carry out their activities effectively without the help of proper dash. No business can carry out the activities effectively without the help of proper dash. Okay, proper audit, proper records and neither A or B, both A and B. No business can carry out its activity without the help of proper audit, या records and account, both या neither of it. Answer over here is records and accounts. Answer over here is records and accounts. See, business cannot basically carry on the activity without having a proper records and accounts. If you don't keep proper records account, पता ही नहीं चलेगा business कहाँ जा रहा है. See, audit अलग चीज है. Audit वहाँ पे required नहीं है, but records and accounts required है. Clear? Okay, next question number 5. Question number 5. ये सारे AI बुकलेट में है. I'm taking the ones which I feel are important. Question number 5. The auditor's dash safeguards the auditor's ability to form an audit opinion without being affected by influences. Auditor's dash safeguards the auditor's ability to form an opinion without being affected by any influences. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go. Answer will be independence. आपका जो independence है ना, that safeguards you from giving an opinion without being affected by influences. Answer is independence. Okay, next we go to question number 9. Next we are going to question 9. Okay, if the auditor concludes
that there's a reasonable justification to change the engagement. There's a reasonable justification to change the engagement, and if the work performed complied with the essays applicable to the changed engagement. अगर management बोल रहा है change the terms of engagement, there's a reasonable justification for change. Change के बाद still will be able to comply with the essay. The audit report issued would be appropriate for the revised term. Okay, in order to avoid confusion, the audit report need not include a reference to. Audit report need not include a reference to original engagement or procedures that may have been performed in original engagement. B, the original engagement. C, the procedure that may have been performed in original engagement. And D, original engagement and any procedure that may have been performed in original engagement. What is the answer according to A, B, C? यहाँ पे word or लिखा है, यहाँ पे word and लिखा है. That's the only difference between A and D. You should not refer to the original engagement or any procedure that may have been performed. But D में क्या लिखा है? Original engagement and any procedure that may have been performed in original engagement. Answer should be A for Ahmedabad. So you should not refer. See, जब भी terms change करे, reasonable justification है, do the audit as per revised terms. फिर अब ये terms change हुए हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है. We need not include a reference. We need not include a reference to original engagement or any of the procedure that has been performed in the original engagement. सुरेश त्रिपाठी जी, रितेश, are you clear? This or both भी हो सकता है, anything. Okay, next. If auditor is unable to agree to change the terms of audit engagement and is not permitted by management to continue. Okay. Change करने, you feel change is not justifiable and they don't allow you to continue the original engagement, तो क्या करे? Withdraw from engagement wherever possible under applicable law and regulation. Determine whether there is an obligation, contractual or otherwise, to report to the circumstances. Withdraw from audit engagement wherever possible and determine whether there is any obligation. So C is covering A and B both. C covers A and B both. Withdraw from engagement wherever possible under applicable law or regulation or determine. यहाँ पे word and है, यहाँ पे word or है. यहाँ पे word and है, यहाँ पे word or है. Which will be the answer according to you, C or D? So if they want a change, we are unable to agree to change and they don't allow us to continue. Withdraw from engagement wherever possible under applicable laws and regulation and determine क्या कोई आपकी obligation है to tell it to appropriate authorities. The answer over here will be C. Here will be C. Okay, great. 11th. A request from a client for a change. A request from a client for the auditor to change the engagement. Now, they may request you to change the terms. 1. There's a significant change in circumstances or a misunderstanding as to the nature. Okay, so एक तो circumstance, दूसरा there was some misunderstanding. And restriction on scope they want to put. The answer will be 1 only, 1 and 2, 1, 2, 3 all, 1 or 2 or 2 or 3. Answer will be 1, 2 and 3 or 1 or 2 or 3, कोई भी हो सकता है. Answer will be D. It can be 1 or 2 or 3, anything it can be. It can be 1 or 2 or 3, anything it can be. ये कोई भी reason के कारण they may tell you to change the terms. Okay. They want to restrict the scope, उसके कारण भी change करना चाहते हैं वो लोग terms. Suresh, they want to restrict your scope, उसके कारण भी they might tell you to change the terms. Request may come due to any of the following.
Answer is D. Moving ahead, question number 16. Question number 16. Keep smiling. Okay, statement number 1. There are two statements. Okay. Statement पहला कौन सा है? The establishment of overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete or a sequential process. Okay, they are telling they are not necessarily discrete or a sequential process. They are sequential process. यार पहले strategy determine करते हैं फिर detailed plan बनता है. So can I say this is false? This is incorrect. Second statement. Auditor shall establish an overall audit strategy that guides the development of audit plan. Ab strategy banao that will guide the development of audit plan, sir. That's correct. That is correct. So this second statement is correct. Pehla wala incorrect hai, dusra wala correct hai. Let's see the options. Let us see the options. Only statement 1 is correct. Only statement 2 is correct. Both are correct. Both are incorrect. Only 2 is correct. Only statement 2 is correct. Okay. Question 17. Question number 17. Pay attention. You need to keep on speaking. आपके वहाँ बोलते रहिए answer. Make sure you are replying. जितना ज़्यादा reply करोगे, you'll enjoy the sessions. And definitely your knowledge will be enhanced. Which of the following is not addressed by overall audit strategy? Which of the following is not addressed by overall audit strategy? Strategy में क्या cover नहीं होता? Scope of audit, timing of audit, direction of audit, monitoring of audit. Tell me. Scope, timing, direction, monitoring. Which is not addressed in overall audit strategy. Answer is not addressed is monitoring, the D1. Monitoring of audit strategy में नहीं आता, वो detailed plan में आता है. Monitoring of audit does not come in strategy, it comes in detailed plan. Next. Question number 19. Determining a benchmark. Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark. याद है एक word आता था? That was audit benchmark. तो materiality level कैसे decide करते थे? Materiality level was decided as some percentage of PAT, PBT, turnover, net worth. तो PAT, PBT वो आपके benchmark थे. अब कितना percentage लूं? कितना percentage लूं? Involves an exercise of independence, professional judgment, professional skepticism, professional behavior. How much percentage I take? This much percentage of PBT or PAT. It involves exercise of professional judgment. Involves exercise of professional judgment. Next is question number 23. When planning the audit, the auditor considers what would make the financial information materially misstated. जब आप plan कर रहे हो, while planning an audit, the auditor considers what will make the financial statement materially misstated. Auditor need not consider what will make the financial statement materially misstated. Auditor need not consider what would make the financial statement materially misstated at planning stage. And D, auditor needs to consider what would make the financial information materially misstated while conducting audit only. Planning, do we need to consider क्या statement हो सकता है? My question is क्या answer A होगा या क्या answer D होगा? A में you consider what would make the financial statement materially misstated. D में लिखा है you need to consider what would make the financial statement materially misstated while conducting audit only. नहीं नहीं planning. So answer should be A. Your answer will be A. While planning and performing an audit, कहाँ पे misstatement हो सकती है वो सारी चीजें consider करते हैं. Next one, question 25. Which of the following is true? Which of the following is true? Try karo, man. The internal audit plan should be comprehensive enough to ensure
that it helps in achieving the overall objectives of internal audit. Internal audit का plan exhaustive होना चाहिए so that it is helping to achieve the overall objectives of internal audit. The internal audit plan should generally be consistent with the goals and objectives of internal audit function. And in case the entire internal audit or a particular internal audit engagement has been outsourced, you also need to see that the plan is consistent with the terms. All of the above. तो actually सारे ऊपर सारे के सारे सही है. तो answer should be D. D, all three are correct. So D, all of the above. Next one, question 28. Next one is question 28. Statement number 1. A response that indicates a difference between information requested to be confirmed and information provided by confirming party. अच्छा, मैंने आपको पूछा क्या 1 लाख है, आपने मुझे ना बोला. There's a difference. I am asking, is the balance 1 lakh? You are telling no, it's 2 lakh. Is it a negative confirmation? इसको negative confirmation बोलते हैं. इसको exception, tally नहीं हुआ, इसको exception बोलते हैं. तो this one is incorrect. So difference between the balance asked and actual balance tally नहीं हो रहा है, उसको negative confirmation नहीं बोलते. Negative confirmation is you report only when there is a basically negative thing. अगर आपका बैलेंस टैली नहीं हो रहा तभी रिप्लाई करो, उसको नेगेटिव कंफर्मेशन बोलते हैं. अगर डिफरेंस है दोनों के बीच में तो उसको एक्सेप्शन बोलते हैं. ओके. स्टेटमेंट 2. A failure of a confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or the confirmation request written undelivered. अच्छा, तो आप मुझे रिप्लाई, उसको क्या मैं एक्सेप्शन नॉन रिस्पॉन्स बोलते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन, दूसरा वाला इज नॉन रिस्पॉन्स. तो ये भी इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है. चेक द सॉल्यूशन गिवन. आंसर विल बी सी, बोथ आर इनकरेक्ट. आंसर विल both are correct. I hope you are able to understand. First one definition वो exception की थी, second जो definition वो non response की थी, response नहीं किया. Okay, question number 29. सिर्फ वही ले रहा हूँ which are important. Please make sure you pay proper attention. Tripathi ji, Suresh, Bhupendra, Himanshu, please make sure you're paying proper attention and replying. Chalo. CA Vijay is a statutory auditor of XYZ Limited for FY 21-22. CA Vijay is a statutory auditor of XYZ Limited for FY 21-22 during the process of assembling the final file. अच्छा, ये बताओ, final file assemble करना है. Before I give my report, मुझे final file assemble, या after I give my report I can assemble? Before I give my report, final file assemble. After I give my report, I can assemble. After you give your report, you can assemble. Assembling within 60 days from the date of audit report. Audit report देने के बाद 60 days में आप assemble कर सकते हो final file. अच्छा. Now, which of the following changes cannot be made? Which of the following changes cannot be made during the assembly process? Assembly process में कौन सी चीज नहीं कर सकते हैं? ओके, सॉर्टिंग, कोलैटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग ये सब कर सकते हैं. साइनिंग ऑफ, हु डिड विच वर्क, ये कर सकते हैं. डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग, सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, ये भी कर सकते हैं. असेंबलिंग इनटू फाइनल फाइल में न्यू ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं कर सकते. जो ऑलरेडी किया डॉक्यूमेंट अप डाउन करके डॉक्यूमेंट वो सब प्रॉपर कर सकते हैं. न्यू ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर सकते बिकॉज द रिपोर्ट इज ऑलरेडी गिवन. Answer, what thing cannot be done is D. Perfect. Okay, next is 32. Audit documentation provides evidence of the basis for conclusion about the achievement of overall objective or the evidence that the audit was planned in accordance with SA.
अच्छा, तो डॉक्यूमेंट एविडेंस योर कंक्लूजन कि कंक्लूजन कैसे आया, एंड एविडेंस क्या आपने ऑडिट प्लान किया था एज पर ऐसे, यहाँ पे वर्ड और लिखा है, नीचे सेकंड ऑप्शन में एंड लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में एंड, टेल मी ए या बी में से आंसर, सीधी में इंडिविजुअली लिखिए वो गलत है। Documentation serves as a evidence one for conclusion and evidence that the audit was planned and performed in accordance with SA. Answer will be B. ये not or. ये अच्छे कि how minutely कितना ध्यान से पढ़ना पड़ता है, लिखा है या और लिखा है, the thing to evaluate. Okay, which of the following is correct? Question number 33. Which of the following is correct? Number one, auditor shall assemble the audit documentation in a file and complete the admin process on a timely basis after the date of audit report. On a time basis after the date of audit report. Auditor shall assemble the audit documentation in audit file and shall not complete the admin process. Shall not complete कोई admin process. तीसरा, the auditor shall assemble the documentation in an audit file and complete the audit process on a timely basis before you give your report. या आपको assemble ही नहीं करना है. You need to assemble file before giving report, after giving report. Answer is after giving report. से पढ़ो. Slowly you read it, automatically पता चलेगा. See, this session is there to make you understand कैसे कितने ध्यान से आपको पढ़ना है. It will be after the date of audit report. Answer is A. 34. Audit evidence include information contained in accounting record underlying the financial statements. Information contained in accounting records underlying the financial statements. Both information contained in accounting records underlying the financial statement and some other information. C, only other information. या D, information contained in accounting records or other information. यहाँ पे word and other information, यहाँ पे word or other information. Evidence in क्या? Evidence in what? The information is there in the account as well as some other information and other information, or information in accounting record or other information. Answer should be. आपकी साइड से रिफ्रेश करो हिमांशु, things is fine. Answer should be B for Bombay. Yes, answer B for Bombay. Perfect. Next, आगे बढ़ते हैं. Question 37. Auditor's judgment as to sufficiency. What is audit evidence? इसको sufficient बोलेंगे. Is affected by factors such as materiality. Item is material, मुझे ज़्यादा evidence चाहिए. Then ज़्यादा will be sufficient. Risk ज़्यादा है. I need more evidences. Then more will be sufficient. Size and characteristic of the population. And third, all of the above. All of the above. Answer will be D. All of the above. Is it still breaking voice? Answer should be D. Next. Question number 40. Question number 40. For a given level of audit risk, repeat, for a given level of audit risk, the acceptable level of detection risk, for a given level of audit risk, the acceptable level of detection risk bears dash relationship to the assessed risk of material misstatement. अच्छा, अगर risk of material misstatement is high तो audit risk कैसा होगा? अगर risk of material misstatement is high तो audit risk कैसा होगा? A direct, B inverse, C no relationship, D either A or C.
Okay, if risk of material misstatement के दो component, याद है तो inherent risk, control risk. If inherent risk and control risk is high, people are not good, controls are not good, can I say we'll check in detail? If I'll check in detail, the audit risk will go down. If I'll check in detail, the audit risk will go down. There is an inverse relationship. Are you clear? अगर risk of material misstatement depends on inherent risk, control risk. If inherent risk, control risk are high, people are not good, control are not good, हम ज़्यादा check करेंगे, audit risk will be low. Next is 42. Controls can be dash related to an assertion. Controls can be directly related to assertion, directly or indirectly, या no relationship. Answer is C. Controls can be directly or indirectly related to an assertion. Next, question 44. Question 44, I want the answers from you. Dash refers to a difference between amount, classification, presentation, disclosure of a reported financial statement item and the amount, classification, presentation, disclosure that is required as per the framework. हमने जो disclose किया and whatever is required, उसमें जो difference है, उसको क्या बोलते हैं? Misstatement, fraud, error या fraudulent financial reporting is misstatement. It can be due to fraud or error. याद है misstatement be due to fraud or error. The difference between the amount which is shown in financial and amount what should be shown, the difference is misstatement. Answer misstatement आना चाहिए. Next is question 48. Next, question 48. When deviations from control upon which auditor intend to rely are detected, deviations control are detected, controls are not being followed, the auditor should not make any inquiry to understand this matter. Auditor should make specific inquiry to understand this matter. Auditor should make general inquiry to understand the matter. The auditor should make both specific and general inquiry to understand this matter. तो अगर आपको पता चला controls में deviation है, what should auditor do? Auditor should not do any inquiry to understand. Auditor should make specific inquiries to understand. Auditor should make general inquiries to understand it. Auditor should make general and specific inquiry both to understand it. Answer is B. Answer, you should make an inquiry to obtain understanding of the matter and the potential consequences. Okay, next 49. Next one 49. Okay, because the assessment of risk of material misstatement takes account of internal control. Because the assessment of risk of material misstatement takes account of internal control, the extent of substantive procedure may be increased irrespective of result of control. Control कैसे हो? Procedure बढ़ा दो. Extent of substantive procedure may be increased when the result of test of controls are satisfactory. The extent of test of control is decreased when the test of controls are unsatisfactory. Okay, control अच्छे नहीं है तो सब procedure बढ़ाने पड़ेंगे. Control अच्छे हैं तो substantive procedure कम करने पड़ेंगे. ये सब गलत है. The extent of substantive procedure may need to be increased when the controls are unsatisfactory. Answer is D. Extent of substantive procedure needs to be increased when the test of the result are active. Okay, next 50. Chalo, half century. You've reached the half century. Question number 50. Risk of material misstatement may be defined as. Risk of material misstatement may be defined as a risk that financial statements are materially misstated after audit, during audit, prior to audit. So I want answer from you. Risk of material misstatement
may be defined as the risk that financial statements are materially misstated after audit, during audit, prior to audit, या all of the above. A, B, C, D. Answer over here will be C. C. See, risk of material misstatement depend करता है inherent risk into control risk. Audit तो हुआ ही नहीं है. Audit तो हुआ ही नहीं है, इसलिए answer will be prior to audit. Suresh, prior to audit, because risk of material misstatement is inherent into control risk. Detection risk, audit तो हुआ ही नहीं है अभी तक. Okay, next is 52. The assessment of risk. The assessment of risk is a matter capable of precise measurement. Measure it precisely the risk. Or second is a matter of professional judgment rather than a matter of precise measurement. Matter of professional judgment as well as precise measurement. Yeah, D, none. Answer will be D for Bombay. It's a matter of professional judgment rather than a matter of precise measurement. Next, question 56. Next is question number 56. If the result of misstatement resulting from fraud, the auditor encounters exceptional circumstances that brings into question his ability to continue because of mistake, question to Karu, he should withdraw immediately. He should report to audit team regarding withdrawal. He should determine the professional and legal responsibilities applicable in this case and ask the management for his withdrawal. Answer B. 3 seconds. 3, 2, 1. Answer is C. Determine the professional and legal responsibilities applicable. Don't withdraw immediately, yaar. Determine the professional and legal responsibilities which are applicable and then you can withdraw. Okay, Santosh has a question. Sir, can you explain question 55? Santosh, एक side पे there is 5100 purchase. Purchase should be on debit side, आपने credit कर दिया. Sales should be on credit side, आपने debit कर दिया. इसको बोलेंगे compensating error. एक debit की जगह credit है, दूसरा credit की जगह debit है. Effect will be nullified. Your trial balance will remain tallied. Santosh, it's a compensation error. Okay, next question number 57 is a good one. Which of the following is an example of inflated cash payment? Which of the following is an example of inflating cash payment? Cash payments inflate हुए. Making payment against purchase voucher. Purchase किया था, उसके सामने payment है. क्या inflate है? नहीं, inflate नहीं है. Normal purchase था, उसके सामने payment है. Teaming and leading. Okay, teaming and leading is a technique for suppressing the cash receipt. Debtor से पैसा आया, we don't show it, we take away अभी. Suppressing है वो. Cash sales not accounted, वो भी suppressing है. Cash sales not accounted, वो भी suppressing है. Making payment against inflated voucher. This is the answer. Making payment against inflated voucher is inflate the cash payment. 100 रुपए का बिल था, एक जीरो ऐड कर दिया, 1000 कर दिया. 100 का बिल, we added one zero, 1000, that's inflated voucher. E. Okay, 58. The type of error which becomes apparent in the process of compilation of account. Compilation माने preparation. Accounts बनाते टाइम ही ये पता चल जाएंगे, वो error को क्या बोलते हैं? Self revealing error. Accounts बनाते चल जाएंगे, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, बनाते टाइम ही पता चल जाएगा गलती है, उसको बोलते हैं सेल्फ रिवीलिंग एरर. आंसर इज ए. आंसर इज ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट कब करते हैं? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट कब करते हैं? व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज एक्सीडिंग 10 लाख, एक्सीडिंग 50 लाख,
exceeding 1 crore, or it's 1 or more? Answer C or D? Amount exceeds 1 crore, yeah, it is 1 crore or more. Yes, it's D for Delhi, 1 crore or more. D for Delhi. Next is question 64. Which of the following is a general IT control? Which of the following is a general IT control? General IT control में 4 चीजें थी. General IT control में 4 चीजें थी. एक बेसिकली योर एक्सेस कंट्रोल, दूसरे आते थे प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, तीसरा आता था डेटा कंट्रोल, एंड फोर्थ आता था उसके अंदर एप्लीकेशन एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस. एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल कंट्रोल? जनरल कंट्रोल में एक्सेस सिक्योरिटी. Which of the following is a general IT control? Access security is a general IT control. IT environment को control ही नहीं है. Application control, IT dependent control, they are not general IT control. Next, ये एक दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ. Which of the following is an automated control? Which of the following is an automated control? Now, आपके application IT control, application IT, उसके अंदर मैनुअल भी होते हैं, ऑटोमेटेड भी होते हैं. Which of the following is an automated control? Program change, system generated report, application control. Answer is D. Configuration. See, application control के अंदर automated control होते हैं. Question है automated control का example. Application control के अंदर manual control भी होते हैं, automated भी होते हैं. Automated control का example configuration. तो यहाँ पे सिर्फ यही आना चाहिए, ABCD आना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं चलेगा. सपोज आप अपने मंथ में आपको अक्टूबर लिखना था, आप वहां पे 10 लिखोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ABCD आना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए, तो दैट्स कॉन्फ़िगरेशन. दैट्स अ ऑटोमेटेड कंट्रोल. 65 डन. नेक्स्ट इज 68. Next is 68. The standard that requires auditor to analyze the journal entry. बोला you analyze the journal entries. Now we analyze journal entries to identify fraud है यहाँ पे, तो वो SA 240 ने बोला है. Analyze journal entry is given under SA 240. Next. Dash is a combination of process tools technique that are used to tap a vast amount of data to get a meaningful information. Vast amount of data से information को process बोलते हैं. Data analytics is known as data analytics. है ना? Data analytics is a part of computerized assisted audit technique. तो कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक वो ब्रॉडर वर्ड है, उसके अंदर एक चीज आती है डेटा एनालिटिक्स. बट ये डेफिनेशन स्ट्रिक्टली डेटा एनालिटिक्स की. अगर क्वेश्चन आए डेटा एनालिटिक्स किसका पार्ट है, अगर क्वेश्चन डेटा एनालिटिक्स किसका पार्ट है, तो कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. Dash are manual control that use some data. Okay, ये manual control है, but they need the data coming out of system. ये manual control है, but they need the data coming out of system. इसको बोलते हैं IT dependent control. B. इसको बोलते हैं IT dependent control. That is B. Next, 74th. Dash is a logical subsystem. Dash is a logical subsystem within a larger information system where electronic data is stored in a predetermined manner. Database की definition. Database is a logical subsystem within a larger information system where electronic data is basically stored in a predetermined form. This is database. Okay, next 76th. Next is 76. Who amongst the following is required to comply? Section 149 read with Schedule 4.
who has to comply section 149 subsection 8 read with schedule 4. Schedule 4 independent directors के लिए, और किसके लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए है, तो आंसर इज डी. Okay, which of the following testing method is most effective and gives the best evidence? Best evidence से मिलता था इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन या डी रीपरफॉर्म? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन या डी रीपरफॉर्म? कौन सा आंसर आएगा? आंसर इज डी रीपरफॉर्मेंस. परफेक्ट. आंसर इज डी रीपरफॉर्मेंस. इंक्वायरी टाइम कम लेगा, सबसे कम देगा, बट इट विल गिव अ लीस्ट एविडेंस. बेस्ट ऑडिट एविडेंस कौन देगा? रीपरफॉर्मेंस. नेक्स्ट 78. User training is an activity related to which of the following general IT control? तो जनरल IT कंट्रोल के अंदर चार चीजें. Pay attention. 70 ये अच्छे क्वेश्चन. जनरल IT कंट्रोल चार चीजें: डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस. User training is an activity related to which of the following generalized control? User training या तो होगा related to program change या तो होगा access security. Generally user training majority will be in either program change or in access security. Actually दोनों में आ सकता है. Actually it can come under both. जब भी program change यूजर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जब भी प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं कहने से यूजर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. एंड हाउ टू एक्सेस द थिंग्स, उसके लिए भी शायद ट्रेनिंग. आंसर कैन बी बी और सी, एनी ऑफ इट. देख लेना, विच एवर दे हैव गिवन यू टेक डाउन दैट ओनली. आईसीआई बुक में जो आंसर वही लो, अदरवाइज ये बी सी दोनों में हो सकता है. अच्छा, तो फिर से योर जनरल आईटी कंट्रोल आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स. जनरल आईटी कंट्रोल 4 पार्ट्स में: डेटा सेंटर नेटवर्क कंट्रोल, प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट मेंटेनेंस. अब ये चारों के ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. Objective of establishing security policies and procedures is to ensure that the production systems are processed to meet the financial reporting objective. ये जो है ना, production systems are processed to meet the financial reporting objective, ये actually data center and network operation का objective है. ये data network operation का objective. Second, to see that the modified system meets the objective. Modified system ये program change का objective है. तो पहला वाला था वो data center and network operation का objective था. Modified system is basically a program change का control, मतलब उसका objective. To ensure that the access to program and data, access to program and data is authenticated, ये access security का control है. Access security का control. And the systems are developed, configured, implemented to meet objective. ये हमारा objective हो गया last वाले का. ये 4 item objective वो चारों नीचे लिखे हुए. 4 item के objective वो चारों नीचे लिखे हुए. Okay, now objective of establishing security policy. Security policy किसके लिए होता है? Access के लिए होता है. Security policy is for accessing the things. Accessing वाला answer will be C. Did you understand? Security policy for accessing. This is for access control. तो 4 चीजें कवर होती है जनरल आईटी कंट्रोल. तो चारों के ऑब्जेक्टिव यहां लिखे थे. सिक्योरिटी पॉलिसी प्रोसीजर किसके अंदर आते हैं? एक्सेस के अंदर आते हैं. आंसर इज सी.
होप यू आर क्लियर विथ क्वेश्चन 79. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. Okay, next. Question 82. Next is question number 82. Applying dash gives the most effective and efficient audit evidence. Most effective and efficient किससे मिलता है? Inquiry in combination inspection. Answer is A. Inquiry inspection gives the most efficient and the effective audit evidence. Any doubts? Anybody? Question number 79 में जनरल आईटी का तो 4 चीजें थी, वो चारों के ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखे थे. सिक्योरिटी पॉलिसी इज पार्ट ऑफ एक्सेस कंट्रोल, तो आंसर विल बी सी. वांट योर आंसर्स फास्ट. 79. Okay, now going to question 84. Going to question number 84. Okay, main advantage of using statistical sampling. मैं highlight करता हूँ word main advantage. Main advantage of using statistical sampling. ये सारे advantage है. Answer all of above नहीं आएगा. Question is main advantage. Main advantage is you can measure the risk mathematically. Statistical sampling use करोगे, you can measure the risk mathematically. That's the main advantage. Next. Next, tolerable error. Okay, क्या है tolerable error? Tolerable error is the maximum monetary error. This is also very good one. This is important. Tolerable error is the maximum monetary error that auditor is prepared to accept. कितना आप tolerate कर लोगे? And you will still conclude कि audit का objective achieve हो गया. It's directly related to. Tolerable error is directly related to sampling size, audit risk, materiality, expected error. Tolerable error is directly related to. Answer is materiality. कितना मैं टॉलरेट करूंगा वो डिपेंड मटेरियलिटी पे. अगर आपका मटेरियलिटी लेवल इज लेस, आप टॉलरेट भी कम करो. अगर आपका मटेरियलिटी लेवल हाई होगा, आप टॉलरेट भी ज्यादा करोगे. It is directly related to materiality. Did you understand? The tolerable error is not directly related to audit risk. It's directly related to materiality. Materiality. अच्छा, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं आपका टॉलरेंस लिमिट इज हाई, सैंपल साइज कैसा हो? आपका टॉलरेंस लिमिट हाई है, सैंपल साइज विल बी हाई और लो. अगर आपका टॉलरेंस लेवल हाई है, इफ यू आर रेडी टू टॉलरेट मोर एरर्स, तो आपका सैंपल साइज विल बी लेस. रीजन, जब भी टॉलरेंस लेवल क्रॉस होता है, यू हैव टू चेक एक्स्ट्रा. इफ माय टॉलरेंस लेवल इज हाई, मुझे एक्स्ट्रा चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरा सैंपल साइज लो होगा. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टॉलरेबल एरर साइज. नीचे जाओ. क्वेश्चन नंबर 89. Okay, as the number of transactions of WY Limited, as the number of transactions of WY Limited for 18-19 were very large, auditor went for sampling. Okay. Before selecting the sampling, you wish that the entire data, okay, the entire data should have 3 characteristics. So population in characteristic. Population should have 3 characteristics. Which one? Simple, complete, relevant. पॉपुलेशन सिंपल होना चाहिए. सिंपल, सिंपल वाले तो सारे ऑप्शन निकाल दो. ये गलत हो गया. सिंपल, पॉपुलेशन सिंपल नहीं नहीं नहीं. कंप्लीट बराबर है, रेलेवेंट बराबर है. यहाँ पे भी सिंपल है, तो अदर देन सिंपल वाला कौन सा आंसर बचा? डी. पॉपुलेशन सिंपल होना चाहिए. नहीं यार, पॉपुलेशन शुड बी अप्रोप्रिएट, कंप्लीट, रिलायबल. अप्रोप्रिएट, कंप्लीट, रिलायबल. सिंपल वर्ड गलत है. ये सब में ये सिंपल था, सिंपल से पता चल गया वो तीनों गलत हो गए. Next, in a random sampling
each item of population has equal. When you go by random number tables, everybody will have an equal chance of selection. Random में everybody will have equal chance of selection. Next 91. अभी किया अभी tolerable error and sample size के बीच में tolerable error and sample size के बीच में कैसा relationship? If I am ready to tolerate more errors, मुझे अपनी procedure change करने की या add करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो sample size की less. Higher the tolerable error, less the sample size, inverse relation. Inverse. Next, चलो अब आते हैं क्वेश्चन 95. 95 is a good one. 90 is a good one. Dash is a comparison of current data with the prior period balance. Okay, current year data को prior period data के साथ कहाँ पे करते हैं? रेशियो में, ट्रेंड एनालिसिस में, रीजनेबलनेस टेस्ट में या स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग में? रेशियो में, ट्रेंड एनालिसिस में, रीजनेबलनेस टेस्ट में या स्ट्रक्चर्ड मॉडलिंग में? रेशियो में आई मे यूज करंट ईयर डेटा ऑल्सो. करंट ईयर का जीपी रेशियो, तो जीपी बाय सेल्स दोनों करंट ईयर के डेटा है. प्रायर पीरियड ट्रेंड में आता है. ट्रेंड पास्ट से वो ट्रेंड लाइन बनती है, तो इट्स ट्रेंड एनालिसिस इज आंसर. प्रायर पीरियड इज बेसिकली द ट्रेंड. Okay, next one. 96. Analytical procedures are more useful while conducting audit and at completion phase, but no use in planning phase. ये incorrect है. Analytical procedure stage में use होता है all the stages of audit. Second, in planning stage, the analytical procedure assists the auditor to understand the business, identify potential areas. ये correct है. Planning stage में you are able to understand the business, identify potential risk. This is correct. So only statement 2 is correct. Only statement 2 is correct. Next, what are analytical procedures? What are analytical procedures? They are designed to assess control risk. Control risk है उसके लिए analytical नहीं. They are designed to evaluate validity of management representation letter. क्या मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन लेकर इवैल्यूएट करने की प्रोसीजर है? नहीं. दे आर टेस्ट डिजाइन टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. यस, दे आर टेस्ट डिजाइन टू स्टडी द रिलेशनशिप इन फाइनेंशियल डेटा. करेक्ट. नेक्स्ट वन 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनालिटिकल प्रोसीजर? मुझे आंसर आपसे चाहिए. Which of the following is not a analytical procedure? कौन सा analytical procedure नहीं है? Tracing of purchases in a purchase book to purchase invoice. Purchase को check कर रहा हूँ, purchase book को match कर रहा हूँ purchase invoice के साथ. Comparing wages paid to number of employees, actual and standard, या all are analytical? पहला वाला A. परचेज को चेक करो बिल्स के साथ चेक. वो टेस्ट ऑफ डिटेल है, नॉट एनालिटिकल. वो टेस्ट ऑफ डिटेल है, नॉट एनालिटिकल. डन. सेंचुरी 100. यू हैव रीच्ड अ सेंचुरी 100. द बेसिक assumption underlying the use of analytical procedure. What is the basic assumption जिसके कारण हम analytical procedure यूज करते हैं? It helps to study the relationship amongst financial information. Relationship amongst data exist and continue in absence of any condition to the contrary. Analytical procedures will not be able to detect the unusual relationship in none of the above. Basic assumption को analytical use करते उसकी assumption है relationship है, and वो रहेगी जब तक opposite cannot be proved. Input इतना output इतना होना चाहिए. तो relationship है, इसीलिए हम procedure यूज कर सकते हैं. आंसर विल बी बी. आंसर विल बी बी, ए. तो इट हेल्प्स टू स्टडी, उसके लिए नहीं करते. बेसिक एजम्पशन बिहाइंड यूज ऑफ एनालिटिकल रिलेशनशिप है एंड दे कंटिन्यू इन एब्सेंस ऑफ कंडीशन टू कॉन्ट्ररी, इसीलिए एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकती है. आंसर विल
बॉम्बे नॉट ए. सुरेश संतोष ए नहीं आएगा, बी आएगा. Reminder, lots of water keeps you fresh, warm water more healthy. जब भी पढ़ाई कर, let's have a sip of water. Next question 101. What is the primary objective of using analytical procedure in the overall review stage? Primary objective overall review stage में, overall review stage, conclusion के stage में, to collaborate the conclusion. Answer is A. To collaborate the conclusions drawn, because overall review stage पूछा. So to collaborate the conclusion, ये वाला आंसर रहेगा. Not to reduce detection risk or not to direct attention to potential area. ये potential area वाला planning stage में आएगा. ठीक है. Question 103. Which assertion is common in balance sheet item, P&L item? कौन सा assertion balance sheet item, P&L item? Completeness. दोनों में completeness. Existence सिर्फ आता है assets liabilities. Valuation सिर्फ assets liabilities में. Measurement सिर्फ P&L item में. Answer is completeness. Completeness दोनों में. Next, question 105. Question for 105. ICI book में है what I feel difference. चलो let's see. When no reply is received, अगर आपको reply नहीं मिलता, auditor should do what? No reply is received for direct confirmation. Auditor should not do additional testing. Auditor should perform additional testing, including subsequent collection ka testing, etc., etc. Or you should perform additional testing, including a detailed analysis of balance. Detailed analysis of balance, whether the balance is made up of identifiable transaction या both A and B. या both A and B. अगर आपको external reply नहीं मिलता, पर additional testing करना है. Question is, क्या only B, only C या both B and C? According to me, it should be both B and C. IC book में they have given B. IC book में they have given only B. Let me just do one thing. Let me open up their ICI material only. तो material open करता हूँ. 1 minute. Chapter number check कर लेते. Latest edition, chapter 9. I'll just try to search the same thing. यहाँ पे जो लिखा है subsequent collections. Audit of different item नहीं आ रहा. Let me just go to trade receivable. Trade receivable पे जाते हैं. Okay, trade receivable. इसके अंदर अगर नीचे जाएंगे confirmation, direct confirmation form of this. ये ठीक है. Okay, now see, when no reply is received, ये रहा, इसके ऊपर question है. When no reply is received, you can do agreeing the subsequent cash balance and agreeing the subsequent cash balance and preparing a detailed analysis of balance, ensuring it is basically having identifiable transaction. तो actually ये दोनों चीजें लिखी है. Agreeing the subsequent cash received and ये दूसरा वाला भी. Actually दोनों चीजें हैं. तो if I go over here,
According to me, the answer should be both B and C. According to both B and C, ICAI given answer as B. ICAI ने सिर्फ B लिखा है, मेरे हिसाब से वो गलत है. तो दोनों चीजें आनी चाहिए. आप देखो यहाँ पे क्लियरली, prepare a detailed analysis of balance, ensure it consists of identifiable transaction, वो सारी चीजें. So write down over here, ICAI answer is B, which is wrong. गलत है. Actually answer should be D, both B and C. Any doubts? 105. Additional testing करो, including subsequent collection का testing है, plus detailed analysis of balance भी करो. दोनों चीजें करो. Answer D, both B and C. 105 हो गया. Next. Okay, 112. Okay, संतोष का क्वेश्चन है, सर MCQ के लिए हमारा बुक सफिशिएंट है या वी हैव टू डू समथिंग एल्स? MCQ के लिए नॉर्मल MCQs हमारी बुक में चल जाएगा. केस स्टडी बेस्ड MCQ मैंने जस्ट 5 केसेस दिए हुए हैं. जस्ट रेफर ICAI MCQ बुकलेट फॉर केस स्टडी. बाकी दिस इज नथिंग बट डिट्टो गिवन इन ICAI MCQ बुकलेट ओनली. तो ये ICAI MCQ बुकलेट में जो दिया है वही की वही चीज है. रेस्ट एश्योर्ड, nowadays they are asking you from that booklet only. बड़ी सी बुक दी है उसमें से MCQ पूछ लेते हैं. तो केस स्टडी के लिए ICAI की MCQ बुकलेट पढ़ लो. बाकी मैंने सारे ऑलरेडी कवर किए हुए. अच्छा, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. ओके, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया. कब किया? 10th अप्रैल को. 10th अप्रैल 21. अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 10th अप्रैल 21, when should I record the income? Dividend income recorded when right to receive dividend is established. Right to receive dividend कब establish हुआ? 10th April 21. तो can I say it should be accounted in FY 21-22? इसको अकाउंट कब करना है? FY 21-22 में. ऐसा मत करो कि 10 दिन इस साल में बाकी का नेक्स्ट ईयर में. नो नो नो, इट्स जस्ट FY 21-22 में पूरा रिकॉर्ड होगा when right to establish 10th April. Next, question number 115. Dear, it's not जब paid होगा तब. It's right to receive is established when it's declared at an AGM. जब वो डिक्लेयर किया जाता है तब हम रिकॉर्ड करते हैं. Okay, useful life of asset is given in schedule में life of fixed asset schedule 2 में है. Schedule 2 में है. 115 over. Next, चलो 124. Next is 124. Okay, section 139. 139 subsection 1. Every company shall at first AGM appoint individual or firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that AGM. Can I say till the conclusion of 6th AGM and thereafter every 6th AGM? Okay, till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. This looks fine. Till the conclusion of 6th AGM only. नहीं, ये गलत है. Till the conclusion of 6th AGM, thereafter till the conclusion of 5th. नहीं, ये भी गलत है. Answer will be A. Who shall hold office till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th AGM. Next, 125. Next, 125. आप statutory auditor हो Kitex Limited के. Kitex Limited for last 5 years. And Kitex Limited is unlisted. Okay, it's a public company limited. Private limited लिखा है तो प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है. अच्छा, रोटेशन कब अप्लाई होगा? अच्छा, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर. पेड अप कैपिटल 10 crores और मोर. ये 10 crores और मोर इक्वल टू और मोर देन 10 crore तब एप्लीकेबल. प्राइवेट कंपनीज में 50 crores और मोर था. प्राइवेट कंपनीज में 50 crore. ये पब्लिक कंपनी है, 10 crores और मोर अप्लाई होगा. E point is the answer. Next, okay, we have 127. Section 120, question number 127.
चार कंपनी है, देयर आर 4 कंपनीज, Z1 लिमिटेड, Y2 लिमिटेड, N3 प्राइवेट लिमिटेड, M4 प्राइवेट लिमिटेड, एंड उनका टर्नओवर दे के रखा है। अच्छा, ऑडिट कमिटी किसको चाहिए? ओके, प्राइवेट कंपनीज को तो ऑडिट कमिटी चाहिए ही नहीं, दिस आर नॉट कवर्ड। प्राइवेट को ऑडिट चाहिए ही नहीं। पब्लिक कंपनी टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, 100 करोड़ और मोर, दोनों का 100 करोड़ से ज्यादा है, तो Z1 एंड Y2, टर्नओवर की बात करिए, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, तो Z1 एंड Y2, तो आंसर इज डी, बोथ Y2 एंड Z1 दोनों को ऑडिट कमिटी चाहिए। प्राइवेट को ऑडिट के दे आर नेवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129। अच्छा, there is a public company, paid up capital is 20 crores, okay, 10 crore से ज्यादा है paid up capital, रोटेशन भी अप्लाई होगा, ऑडिट कमिटी भी चाहिए, ऑडिट कमिटी भी चाहिए। Okay, now in this case, which appropriate authority will consider the experience of the auditor before appointing them? Appropriate authority कौन होगा? That is the question. आपका paid up capital is 20 crores, paid up capital 20 crore, 10 crore से ज्यादा है, audit committee applies. Audit committee applies, तो audit committee has to see the experience of the auditor and then they will recommend name to board of directors. मुझे बताओ यहाँ पे appropriate authority कौन होगी? Audit committee of YW Limited. Appropriate audit committee of YW Limited. Keep replying यार, बंद हो जाएगा। Need to keep replying. Don't think आपको सब आता है, नहीं। Please make sure grounded, ऊपर हवा में नहीं उड़ना है, and we need to be understanding properly. Okay, question number 130. Question number 130. A private limited company जिसका नाम है WS Private Limited had a paid up share capital of 65 crores. Okay, private company 65 is 50 crores or more, rotation applies, rotation apply होता है। Which of the following private company paid up share capital 65 crore, rotation apply? Which of the following is correct relating to rotation? Rotation is applicable because आपका capital 40 crore से ज़्यादा है। Rotation is applicable because आपका paid up capital 50 crore से ज़्यादा है। Rotation not applicable, rotation not applicable. Answer is B. Rotation applicable because आपका paid up capital is more than 50 crores. Rotation is applicable because आपका paid up capital is more than 50 crores. Next, question 138. Next is question number 138. Which of the following is not a audit procedure to obtain audit evidence? कौन सा audit procedure नहीं है to obtain audit evidence? Section, observation, external confirmation, internal control. Okay, पहले तीनों के तीन, they are method of obtaining audit evidence. D, internal control is not a method of obtaining audit evidence. ये management लगाया है to prevent or detect the frauds and errors. ये management ने लगाया हुआ। Answer is D. Next, question 142. Question 142. Engagement team discussions are usually done at which stage of bank audit? कौन से stage of bank audit में engagement team discussion होते हैं? Appointment के time, developing a plan के time, framing a audit program या issuing a audit report. At which stage is engagement team discussion done? Appointment के time, developing a audit plan, framing a audit program या issuing audit report? Answer B. Developing a plan. Plan बनाते time we do engagement. Plan बनाते do engagement discussion. Next,
Okay, question 147. Question 147. The term drawing power. The term drawing power is associated with which of the following facility? The which facility? OD या CC, ओवरड्राफ्ट या CC, जिसके अंदर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक होगा, आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे, उसके हिसाब से ड्राइंग पावर आएगा. इट इज बेसिकली फॉर ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट. चेक करो ऑप्शन में डी पॉइंट, कैश क्रेडिट. दैट इज योर आंसर. ओके, 48 ड्राइंग पावर फॉर कंसोर्टियम एडवांस. कंसोर्टियम एडवांस ग्रुप में मिलके लोन दी है, उसमें ड्राइंग पावर कैसे डिसाइड होती है? ड्राइंग पावर अलोकेशन कैसे होता है? लीड बैंक करता है. इज कंप्यूटेड एंड अलोकेटेड बाय लीड बैंक. तो लीड बैंक विल बी डूइंग द ड्राइंग पावर अलोकेशन कंसोर्टियम एडवांस में. रिप्लाई भैया जी, कहां गए आपके रिप्लाईज? Question number 149. A Limited has been assigned a cash credit limit of 20 lakh against a book debt. Book debt माने debtors. इसी है 20 लाख की against book debt. अच्छा, इसको कौन सा सिक्योरिटी बोलते हैं? मेरे डेटर्स आपके अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ डेटर्स मुझे सीसी लिमिट मिली है. डेटर्स यू कैन कलेक्ट डायरेक्टली. डेटर्स यू कैन कलेक्ट डायरेक्टली. टाइप की सिक्योरिटी है. प्लेज किए डेटर, मॉर्गेज करे डेटर, असाइन कर दिए डेटर, सेट ऑफ. विच इज दिस? प्लेज, मॉर्गेज, सी पॉइंट असाइन या डी सेट ऑफ. दिस इज assignment of debtors. C. Answer is C, assignment of debtors. Next is question number 153. Next है 153. Dash aims at ascertaining that the expenditure incurred has been incurred for the purpose for which the grant and appropriation has been provided, and the expenditure does not exceed the appropriation. Appropriation माने budget. Appropriation माने budget. इसको क्या बोलते हैं? Audit against provision of fund. क्या बोलते हैं? Audit against provision of. Answer will be A. Audit against provision of fund. नेक्स्ट वन, LLPs को एक रिटर्न फाइल करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्लोजर ऑफ ईयर. कौन से फॉर्म? LLPs को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर. कौन से फॉर्म? फॉर्म नंबर 8. फॉर्म 11 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी पोजीशन. फॉर्म 11 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी पोजीशन जाता है. एनुअल रिटर्न गोज इन फॉर्म नंबर 11. Annual return goes in form number 11 and form number 8 में जाएगा annual statement of solvency. Form 11 and annual account solvency वाला thing that goes in form 11. Okay, cooperative society. Cooperative society के audit में एक audit report के साथ साथ आपको 2 question करके देने हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ आपको 2 क्वेश्चन भर के देने हैं. वो क्या बोलते हैं? You have to answer 2 sets of question as called as audit memo. क्या बोलते हैं उसको? Audit memo. Answer is C, audit memo. Next question 158. अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बन गए, फिर अच्छा P&AG ने अकाउंट्स दे दिए किसको? P&AG ने अकाउंट्स दे दिए प्रेसिडेंट या गवर्नर को. हु विल प्रेजेंट इट विद द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट कमिटी बनाइए, पब्लिक अकाउंट कमिटी. दैट ऑल अकाउंट्स आर स्क्रूटिनाइज्ड बाय पब्लिक कमिटी फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट.
अलग क्वेश्चन था. दिस इज फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने कमिटी बनाई है. एंड एजी अपनी रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट या गवर्नर को. प्रेसिडेंट या गवर्नर प्रेजेंट करेगा. प्रेसिडेंट या गवर्नर किसको प्रेजेंट कर टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. जब वो पार्लियामेंट में जाती है, दैट ऑल रिपोर्ट्स आर ऑटोमेटिकली रेफर्ड टू पब्लिक, और वो लोग स्क्रूटिनाइज करेंगे. तो स्क्रूटिनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162. Question number 162. CAR illustrated to esteem utility of audit program. Utility of audit program and can be retained and enhanced only by keeping program as well as the client operation under recurrent assessment. अच्छा, तो utility of audit program यहाँ पे can, and word is missing. Can be retained only by keeping the program under recurrent assessment. Means constantly program आपको modify करते रहना है जब भी जरूरत पड़े. तो which attribute is highlighted here? कौन सा attribute highlight हुआ है? Static review, mechanical review, periodical review, obsolete review. Answer is periodical review. तो periodically review करते रहना है audit program को. जब भी change की जरूरत पड़े, you should change your audit program. Hope you are clear. Also people. Yeah. Okay, next is question number 164. Question number 164. Following is not an example of event or condition that cast a doubt on going concern. Which is not an example which cast a doubt. Loss of key management person without replacement, ये operational indicator है. Adverse key ratio, financial indicator है. Inability to pay creditors on due date, ये भी financial indicator है. तो आंसर एक ही बचा D. Current year profit turns to loss अगर depreciation provide करो. वैसे profit है, depreciation के कारण loss है. It is not a going concern का issue. वैसे profit है, but depreciation के कारण loss हो गया. It's not a going concern issue. D is the answer. Which is not an example of condition or event that cast a doubt on going concern. D. Next we have question number 171. Next is question number 1. Dash requires firms to establish policies and procedure for retention of dash. Okay, dash requires you to have a policy procedure for retention of dash, and the retention period is no shorter than from the date of audit report to the date of group's audit report occur. Who is telling you to have policies procedure for retention of what? Okay, retention होगा documentation. Retention किसका होगा? Documentation का. And किसने आपको बोला you should have policy procedure? Policy procedure SQC1 बोलता है. Policy procedure ऐसे बोलता. Policy SQC1 बोलता है, तो answer will be SQC1. And you should have a policy procedure for engagement documentation, and it should be for how much period? The retention period should be for 7 years. Answer is C. Majority लास्ट वाला डी लिख के आ जाते. मेजॉरिटी डी लिख के आते. ऐसे 2/3 पॉलिसी नहीं बोलते. पॉलिसी ऑलवेज बाय SQC1. प्लीज इंटरप्रेट द थिंग वेरी केयरफुली. आंसर गलत नहीं है. नेक्स्ट 73. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल. 173. Auditor may consider it helpful to prepare and retain as a part of audit documentation in a summary. Summary को हम बोलते हैं completion memorandum. उसमें क्या होता है? क्या होता है completion memorandum में? Significant matter. How did you deal with it? Significant evidence identified? नहीं. Significant matters identified. How they were addressed? Yes.
Significant evidence identified, significant matters, answer is B. Significant matters identified, how did you deal with it? That is covered completion. And that's it. This is all your normal MCQs. ये सारे आपके normal MCQs, उसके answer already are given to you. कोई भी doubt आए definitely ping me. We have a Telegram discussion group, उसमें डाल सकते हो. अब मैं जा रहा हूँ थोड़े से case study based MCQ. Now I'm going to case study based MCQ. एग्जाम में सर क्या आता है? दोनों. एग्जाम में नॉर्मल एमसीक्यू भी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी आते हैं. बोथ आर कमिंग एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. सी व्हाटएवर सिचुएशन, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म्स आपको अच्छा लगता है, प्लेटफॉर्म नहीं लगता. आई नो यूट्यूब में सेशन में लैग आता है. When I'm taking on Unacademy, there's no lag. You all prefer that platform. I also prefer that platform. इसका में ये नहीं attend. Telling you seriously, whichever platform it is, it's उसका ये meaning नहीं है कि यार वो platform में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, I'm not attending class or I'm not replying. This is your biggest mistake. Match कैसी भी हो, महेंद्र धोनी, way he interprets or way he goes forward for the match same है. बांग्लादेश के सामने खेलने, ऑस्ट्रेलिया के सामने जाएगा, the facial expression is same, the dedication है same. चलो आगे बढ़ते हैं. केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू. नाउ ये केस बेस्ड एमसीक्यू क्या होगा? दे विल गिव यू अ बिट ऑफ थियरी. पहले दे विल गिव यू अ बिट ऑफ थियरी, बट इंपॉर्टेंट रीड द एंड मेनी टाइम क्वेश्चन विल नॉट बी रिलेटेड टू थियरी. एक कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो डिस्क्रिप्शन से शायद रिलेटेड केस होगा भी नहीं. So don't worry about the case study based MCQ. This is based on only. तो जो बंदा normal MCQ attend कर पाएगा, he will definitely be able to attend the case study based MCQ also. Normal MCQ attend कर, case study based पक्के से कर पाओगे. ICAI की booklet, ICAI, there are 60 case study. Repeat, 60 ICAI MCQ case studies है. मैंने सिर्फ 5 रखा. I have given you 5 case studies over here just for reference. बाकी you should refer from the ICAI book. ICAI book में 60 case study based MCQ किए हुए हैं, 5 लिए हुए हैं. Let us just discuss this. फिर बाकी के please refer it to ICAI book without fail. And reminder, at Unacademy the fees are hiking very fast. Please make sure आप या आपके friends जिसको भी subscription लेना है, they take it. Expect fees is up to 25%. Now question number 1. Messrs. JJ and Associates having office in Chennai are statutory auditor under Companies Act 2013. They are the statutory auditor, Sweet Aroma Private Limited. They manufacture rice from paddy and they serve both domestic and international market. Huge demand है उनकी and उनके पास बहुत सारा inventory होता है. So ये just they wanted to tell their huge inventory. तो questions होंगे related to inventory. बाकी ये story का कुछ काम. Now see question number 1. They want to obtain evidence regarding inventory. ऐसे 501 है. Which of the following is most likely in relation to obtaining of sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition? मुझे बताओ existence and condition कैसे पता चलता? Physical counting. So it is mandatory for auditor to attend the physical counting. Mandatory. वैसे yes, but अगर unusual circumstances आ गए, you are not able to attend, you should do alternative procedure. Second, physical counting may be done by auditor on financial statement date. ये बोल रहे हैं mandatory on financial statement date. Mandatory on financial statement date in all circumstances गलत है. We can do on alternative date also. You may attend on financial statement or a date other than the financial statement in all circumstances. Third, attendance of
auditor at physical counting impracticable due to time and cost involved? नहीं करना चाहिए attend. And D, you should attend the counting unless impracticable. Very good, ये बराबर है. You should attend the counting unless impracticable. Unless impracticable, you should attend the counting. And but just time cost ज़्यादा लगेगा, that's not an excuse. That's not an excuse. Answer will be D. You shall attend the counting unless impracticable. Based MCQ ऊपर जो थियरी है ना उसका कोई रेलेवेंस नहीं ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रेलेवेंस नहीं. सेकंड 1.2, below are given cluster of matters which are relevant in planning attendance. Which of the following cluster consist of likely inappropriate combination? Attendance at physical counting में which one is inappropriate? Attendance at physical inventory counting में which one is inappropriate? जब मैं attend करूंगा, would I see nature of inventory? Yes. Timing? Yes. Stage of completion? Yes. Okay. तो जब मैं attend करूंगा, nature yes, time yes. Valuation method नहीं. Attend physical does not do anything about valuation. Attend करते टाइम कौन सी valuation method use करो उसका कोई relevance नहीं है. Which is inappropriate is this? Which is inappropriate is this? Because valuation नहीं आता attendance करते हैं, quantity पता चलती है, value नहीं. Just a word valuation से is the answer. Just a word valuation से is the answer. Third, which is the most logical sequence? Okay, logical sequence of steps. तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप जब आप अटेंड करते हो फिजिकल इन्वेंट्री, ऑब्टेन परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर. मैनेजमेंट काउंट कर रहा है, ऑब्जर्व करो. इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, टेस्ट काउंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग. एक्चुअली जो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर है ये सबसे पहले करना चाहिए. इवैल्यूएट द मैनेजमेंट प्रोसीजर, ऑब्जर्व हाउ दे आर काउंटिंग. तो पहले इवैल्यूएशन ये पहले आना चाहिए. दे आर आस्किंग यू लॉजिकल सीक्वेंस, ये वाला पॉइंट पहले आना चाहिए, इवैल्यूएशन. लेट्स सी कहां पे ये पॉइंट पहले. ये भी ऑब्जर्व से स्टार्ट हुआ, ये परफॉर्म से स्टार्ट हुआ, लास्ट ये इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएट द मैनेजमेंट प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्व मैनेजमेंट काउंट, इंस्पेक्ट एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट. दिस इज द लॉजिकल सीक्वेंस. Evaluating there will come first. I hope you are clear. Question था logical sequence. Next, during attendance at physical counting, 3 outcome. एक existence पता चला, ownership, condition. ये बताओ, AC देखा, हाँ AC है, क्या इसका यही है कि AC कंपनी का है? AC है doesn't mean ना भी पता चला. रेंटेड भी हो सकता है ना, रेंटेड भी AC हो सकता है. तो एग्जिस्टेंस पता चलेगा, हाँ है. कंडीशन पता चलेगा, ओनरशिप नहीं. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल 3 आर एस्टैब्लिश्ड? नहीं. आउटकम 1 and 3 आर एस्टैब्लिश्ड एंड आउटकम 2 इज नेवर एस्टैब्लिश्ड. यहाँ पे आउटकम 1 and 3 आर एस्टैब्लिश्ड, आउटकम 3 मे बी एस्टैब्लिश्ड. Outcome 2 may be established. This looks fine. Outcome 2 may be established. Outcome 2 may not be established. The answer is D. 1 and 3 are established. Outcome 2 may be established or may not be established. Last wala. It was observed that out of the total physical count, 67 quintal belongs to Messrs PQR, a proprietary concern, जिसने आपको दिया था पेडी to extract rice out of it. किसी और का पेडी आपके पास है, किसी और का पेडी आपके पास पड़ा है, क्या वो आपकी बैलेंस शीट इन्वेंट्री में आएगा? किसी और का पेडी हमारे पास पड़ा है, would it come in our inventory? No. How it will appear in the financial statement of company? It will not appear in our financials.
It would not be reflected in our financial. Answer is C. It would not be reflected in company's finance is C. पहले वाले में लिखा है it will be reflected, wrong. Second वाले में it would be reflected, wrong. थर्ड वाले में it would not be reflected, that's correct. यहाँ पे would be reflected, would be reflected, would be reflected सारे गलत हो. It was a study MCQ. अब आप चेक करो ना, ऊपर जो था उससे कुछ लेना दे. They just tried to create a story. एक कंपनी पेडी में से राइस बनाती है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होती है. Now they give all question related to inventory. Now question 2. Question number 2. Let's see. We do one or two more. A partnership firm, chartered accountant YZ and associate were appointed as auditor of company UV Private Limited. The financial year for the company YZ was began on 1st April, end होता है March 22 में. Okay, उनके 4 partners हैं. While auditing books, one of the partner YZ associate, namely Mr. H, took up the expense part of audit. तो कुछ expense part of audit. तो question expenses related होंगे. Management has adopted various accounting policies, principle related to expenses. Let's see. तो some of the issues जो H के सामने आए, क्या issue थे? Some of the issues जो H के सामने आए वो कौन से issue है? Machine insurance expense आपने पे किया 1 year ending on May 22. ओके, हमारा ईयर कब खत्म हुआ? हमारा ईयर कब खत्म? बट इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है दैट इज 2 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है. अप्रैल एंड मई 2 महीने इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है. इट शुड अपीयर एज अ एसेट इन बैलेंस शीट. बट यहाँ पे पूरे का पूरा खर्चे में ले लिया. पर्सनल रेंट ऑफ द सन, पर्सनल रेंट ऑफ डायरेक्टर सन, उसको रेंट एक्सपेंस बताया नहीं, तो रेंट एक्सपेंस वो पर्सनल खर्चा है, एक्सपेंस चाहिए. अच्छा, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ February एंड मार्च आर आउटस्टैंडिंग नॉट शोन इन बैलेंस शीट. नहीं 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 नहीं, उनको ऐड करो बैलेंस शीट एज अ लायबिलिटी. तो पहले वाले में 2 महीना प्रीपेड था, एसेट की तरह. सेकेंड वाले में वो खर्चा है ही नहीं बिजनेस का, निकाल दो. थर्ड वाले में इट शुड बी इंक्लूडेड, शो इट एज अ लायबिलिटी. फोर्थ, रिपेयर एक्सपेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 22 टू मार्च 22. अच्छा, अप्रैल 21 कर दो, टाइपिंग मिस्टेक. अप्रैल 21 टू मार्च 22. इस साल का रिपेयर ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर. इस साल का रिपेयर ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर. ऑडिटर आस्क्ड द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्यों डिफरेंस है. एंड इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं दिखाई गई. आप इंश्योरेंस एक्सपेंस चेक कर रहे थे, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दिखाई गई. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. ये 5 इश्यू के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे. ओके, तो पॉइंट नंबर 1 में the machine insurance expense for April and May must be shown in balance sheet as prepaid. April and May next year का है, prepaid की तरह आना चाहिए बैलेंस शीट में. पॉइंट नंबर 2, पर्सनल रेंट. पर्सनल रेंट को क्या करना चाहिए? पर्सनल रेंट निकाल दो रेंट में. अमाउंट ऑफ पर्सनल रेंट का क्या करना चाहिए? मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेंट एक्सपेंस. रिमेन एडेड, अगेन एडेड, सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस नहीं, एक बार ऐड हुआ है उसको निकाल दो. थर्ड पॉइंट, जो रिपेयर मेंटेनेंस है 2 महीने का आउटस्टैंडिंग. रिपेयर मेंटेनेंस है 2 महीने का आउटस्टैंडिंग. रिपेयर मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ Feb and March must be shown in balance sheet as a liability. It must be shown in balance sheet as liability payable. प्रीपेड नहीं आएगा, एक्सपेंस नहीं आएगा, एडवांस नहीं आएगा, पेबल आउटस्टैंडिंग. पेबल आना चाहिए. ओके, फोर्थ वाला केस. एज पर पॉइंट नंबर 4 मेंशन इन केस अबाउ, ऑडिटर आज अप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिफरेंस क्यों है? अच्छा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी माने क्या? मैनेजमेंट.
अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, क्या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पूछा डिफरेंस? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन? ऑल एम्प्लॉइज? नहीं नहीं नहीं, मैनेजमेंट, यस। मेंबर्स, शेयर होल्डर से नहीं पूछना है। एनी वन डायरेक्टर? नहीं, आंसर ओवर हियर विल बी मैनेजमेंट, आंसर ओवर हियर विल बी मैनेजमेंट। पॉइंट 5 में उन्होंने आपको इंश्योरेंस कॉपीज नहीं दी। इंश्योरेंस कॉपीज विल प्रोवाइड यू विथ इनवैलिड सपोर्टिंग, नो सपोर्टिंग, lack of proper supporting, या it will provide you with sufficient audit evidence. अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी को देते तो it would have given you sufficient audit evidence. Insurance policies will provide auditor with sufficient appropriate audit. This was case study. चलो एक और करते हैं. Let us move ahead. We do one more third case study. यहाँ पे मैंने आपको 5 दे रखे. This is just a demo kind of for your understanding. बाकी के केस स्टडी ICAI बुक में करने हैं. रिपीट, ICAI MCQ बुकलेट में 60 केस स्टडीज है. You need to do that. Next, Messrs. Laxman is appointed as statutory auditor. Few doubtful transactions आपने फाइंड किए, फ्रॉड जैसे लग रहे हैं. Fraud was going on since last 4-5 years. Amount जो misappropriate हुआ वो 75 लाख है. Amount was 7 less than 1 crore. मुझे CG को नहीं बताना है, बट मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी को बताना है. ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कैश बैलेंस 7 करोड़ रुपए एंड देव टेकन अ लोन ऑफ 2 करोड़. भैया मेरे 7 करोड़ कैश पड़ी है तो क्यों मैंने लोन ली 2 करोड़ की? This shows something गड़बड़. This shows something गड़बड़. ओके, कंपनीज एक्ट में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है CGBG को बताने की? यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर. ओके, द लक्ष्मण shall obtain dash that the financial statements are free from material misstatement. Lakshman shall obtain what? Absolute assurance, reasonable assurance, management assurance. Answer is absolute nahi, reasonable assurance. You have to obtain a reasonable, financial free from material misstatement. Okay, Lakshman suspects cash payment are inflated. आपको लग रहा है cash payment inflated है? Give the example of, इसमें से which can be the probable reason of inflated cash payment? Account हो गया. पेमेंट अगेंस्ट परचेज वाउचर, वो इन्फ्लेशन नहीं है, परचेज है, उसके सामने पेमेंट है. मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट फिक्टिशियस वाउचर, यस, या इन्फ्लेटेड वाउचर. 1000 कर दिया, एक जीरो ऐड एंड देन वी मेड अ पेमेंट. दैट इज इन्फ्लेटिंग कैश पे. अच्छा, इस केस में आपको ये रिपोर्ट किसको करना है? 14312 फ्रॉड 70 CG को नहीं बोलेंगे, ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. You are required to report to audit committee or the board. You are required to report audit committee. You are required to report to audit committee and the board. अच्छा, ये और board है, and board है. Answer will be audit committee or the board of director. And मिलेगा audit committee or the board of director. Next 3.4. Owing to dash limitation of an audit, there's a dash risk that some material misstatement will not be detected. Owing to an inherent limitation, there's an unavoidable risk. ये है owing to inherent limitation. Inherent जैसा तो कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. Answer is A. Owing to an inherent limitation of audit, there's an unavoidable risk. क्योंकि थोड़े से mistakes will not be detected. And fifth one, यार इतना सारा कैश रखा, 7 करोड़ रुपए का कैश रखा है और सामने 2 करोड़ की लोन रखी है. लोन रखी है, 7 कैश पड़ा है. तो रिपोर्ट दिस मैटर टू CG as there is a possibility of fraud. Obtain sufficient appropriate evidence of existence of fraud. Report the matter under CARO and nothing to be done.
यहाँ पे अभी we don't know fraud है या नहीं. We should obtain sufficient audit evidence to find क्या इसमें कोई fraud है. तो आंसर B लिखना है. We should have sufficient appropriate audit evidence to find क्या fraud है. Answer is, hope you're clear. We did case study based MCQ. एक और लास्ट कर ले, fourth one. We did 3, fourth एक और कर लेते हैं, last one related based MCQ. फिर से याद दिला, 60 केस स्टडी बेस्ड MCQ ICI की बुक में दिए हैं. यू नीड टू एंश्योर वो बाकी एक बार वन टाइम यू डू इट. जो अच्छे लगे उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. विच एवर यू लाइक इट उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो सो दैट यू डोंट मिस आउट द थिंग्स. ओके, चलो एक काम करते भी, कीप इट अप टिल हियर ओनली. ये 3 ही रखते हैं. 4th and 5th वी आर नॉट डूइंग एज ऑफ नाउ. आई विल जस्ट टेल यू फ्यू टिप्स एग्जाम में. वी नीड टू एंश्योर वी आर परफेक्ट इन एग्जाम. के लिए क्या ऑडिट सब्जेक्ट में ध्यान. व्हाट थिंग्स टेक केयर इन ऑडिटिंग. सर पहले तो इतना बड़ा सब्जेक्ट, द वेरी यूथ रिमेंबर द थिंग्स. सी रिमेंबर द प्रोसेस. एक बार या एक साथ 5 बार पढ़ने से याद नहीं रहेगा. 5 बार नहीं पढ़ना है आपको, 5 बार पढ़ना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. yes you have to read the entire subject 5 times but over a period of time. थोड़ा करके. lots and lots of revision are required. Theory subject all more revision. इसके अंदर language बहुत important हो जाए. Keywords, key sentences, सिर्फ keywords नहीं, keywords, key sentences play a very important role. तो ये याद रखना है. कोई भी आंसर, your answer should be very general. बहुत जनरल आंसर होगा तो नहीं. फिर से याद दिला दूं, इफ यू आर रिवाइजिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 टाइम, थियरी को 3 बार रिवाइज करो, एक बार ज्यादा. ऑल थियरी सब्जेक्ट हैज टू बी रिवाइज्ड 1 टाइम मोर कंपेयर्ड टू प्रैक्टिकल. जितना प्रैक्टिकल कर रहे हो थियरी को एक बार ज्यादा रिवाइज. दिस विल एंश्योर कि भी आपकी थियरी स्ट्रांग हो गई है, आपके आंसर्स में वो प्रॉपर लैंग्वेज आ रही है, आंसर्स नॉट वेरी जनरल. इस थियरी सब मत कर. बिगेस्ट प्रॉब्लम है are ready to give time accounts, are ready to give time to costing, students are ready to give time for taxation. उनको ऑडिट लॉ पढ़ने में उसमें टाइम नहीं देना है. दैट्स द प्रॉब्लम. यार ये भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट है. ऑडिट लॉ बोथ आर 100 मार्क्स सब्जेक्ट. गिव इक्वल जस्टिस. यस प्लीज गिव इक्वल जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट. अगर आप इसको नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आएगा. एवरीबडी नोज मेजॉरिटी स्टूडेंट फेल होते हैं ऑडिट में, आईटी में, लॉ में. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो फेल हो रहे हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी इज ऑडिट, आईटी, लॉ. तो आई शुड बेसिकली गिव मोर टाइम टू इट या लेस टाइम टू इट. आप ही सोचो. हम लोग उसको कम टाइम देते हैं. दैट्स आवर बिगेस्ट मिस्टेक. नंबर 2, आप मॉक टेस्ट, प्लीज यू एंश्योर यू आर राइटिंग मॉक टेस्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट. इस सब्जेक्ट शुड बी रिटन. सारे सब्जेक्ट का एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट. एडवाइजेबल तो 2 है. अगर आप मॉक टेस्ट लिखोगे आपको पता चलेगा हाउ मेनी मार्क्स यू आर एबल टू कंप्लीट. अगर आप मॉक टेस्ट लिखोगे आपको पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड, या भी आप वीक हो, विच पॉइंट नीड्स टू बी इम्प्रूव. सारी लिखने से राइटिंग प्रॉपर मॉक टेस्ट. नंबर 3, अगर बाय चांस अच्छा नहीं जाता, इफ बाय चांस वन ऑफ योर पेपर डजंट गो वेल, एंड की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. आई एम वेरी फ्रैंक टू यू, the probability is very high कि one of the paper doesn't go up to your expectation. Don't skip your remaining. अगर एक पेपर अच्छा नहीं गया, इट्स ओके, वो पेपर गया. फोकस ऑन रिमेनिंग पेपर्स जो है उसको आप अच्छे बनाओ. नेवर स्किप योर एग्जाम. अगर आपने एग्जाम स्किप किए ना, आई टेल यू आपका कॉन्फिडेंस गो डाउन. जब तक 6 महीने नेक्स्ट एग्जाम नहीं आती और वो अच्छी नहीं जाती, तब तक आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही रहने वाला. तो प्लीज नेवर एवर स्किप योर एग्जाम. ऐसे पेपर जाए, राइट इट डाउन. यार अगर बाय चांस पेपर अच्छा नहीं गया, आई फील सर मैं फेल हो जाऊंगा, 10 दिन और पेपर लिख लो ना, या 5 दिन और पेपर लिख लो, क्या फर्क पड़ने वाला है. वैसे भी यू आर थिंकिंग ऑफ राइटिंग एग्जाम आफ्टर 6 months. डोंट स्किप योर. एवरी डे ऑफ योर शुड गो विद अ स्माइल ऑन योर फेस.
You should be happy with your preparation. आज ये लेक्चर जब स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बोला था, whatever you are doing, you need to be happy with your preparation. आप किसी और को कंपेयर मत करो, आप अपने आप की प्रिपरेशन से हैप्पी हो. दैट शुड बी द थिंग. मुझे आज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी थी, अगर मैं करूंगा आई विल बी हैप्पी. द डे व्हेन आई एम हैप्पी आई विल स्लीप विद अ स्माइल ऑन माय फेस, नींद भी अच्छी आएगी, नेक्स्ट डे आई विल वेक अप विद फ्रेशनेस, अगेन नेक्स्ट डे भी अच्छा जाएगा. बट एक बार आप वो बैकलॉग करते जाओगे, लाइक सपोज टुडे आई वाज नॉट हैप्पी विद माय प्रिपरेशन, मूड अच्छा नहीं था. अब मूड अच्छा नहीं था, रात को नींद भी अच्छी नहीं है, नेक्स्ट डे भी काइंड ऑफ ऐसा ही होगा. मेक श्योर एवरी डे ऑफ योर्स गोस विथ योर सेटिस्फैक्शन. मेक श्योर यू आर सेटिस्फाइंग यू. आपको सेटिस्फाई को ऑटोमेटिक विल वर्क वेल फॉर यू. लास्ट बट नॉट लीस्ट, whatever you do well. कुछ भी करो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थर्ड सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डू इट वेल. अच्छी तरह समझ के करो, रटना नहीं है. प्रैक्टिकल पेपर्स में वर्किंग नोट वेरी इंपॉर्टेंट. थियरी पेपर्स में योर इंपॉर्टेंट की वर्ड्स दैट आर मोस्ट, उस पर आप ध्यान रखो. डोंट स्टॉप टिल योर टारगेट इज अचीव्ड. रुकना. यू नो, देयर इज अ सेंटेंस ऑफ मार्टिन लूथर द किंग. मार्टिन लूथर क्या बोला है? इफ यू कांट फ्लाई, रन. इफ यू कांट रन, वॉक. इफ यू कांट वॉक, क्रॉल. रेंगते रहो, बट रुकना नहीं. डोंट स्टॉप, जस्ट डोंट. आपके लिए भी सेम थिंग. फिर एग्जाम्स 2 महीने बाकी है एग्जैक्ट खत्म होने में. लास्ट 2 months are pending. Make sure you are giving your best in this 2 months and you're not stopping your efforts in between. I hope you all enjoyed the session, and फिर से याद दिला दूं, at Unacademy the prices are hiking. Yes, within 2-3-5 days the price are going to hike up to 20% price hike आने वाला है. I'm requesting you or any of your friends जिसको सब्सक्रिप्शन चाहिए, प्लीज अभी ले लो. Don't delay it. बाद में you have to pay more money. And you can use code YESHAS, YESHAS, या फिर CA Niket, कोई भी आप बेसिकली कोड यूज करो, you'll get a special discount. चलो, we'll meet again next time with a special class or a YouTube class. Probably next month I'll take up RTP discussion. RTP A22 आ गए हैं. I'll take up one session relating to RTP. Anybody wants to ask anything, please let me know. Others, tata, bye-bye, see you tomorrow. Not tomorrow, but next session. Bye Tripathi ji. Bye-bye Santosh. Bye Himanshu. Bye Vansh. And one more reminder, बाकी study based MCQ ICI की बुकलेट से पढ़ लेना. Done? चलो, आपकी साइड से I don't think there is any doubt, तो let me end this session. मिलते हैं फिर. Bye bye, study well.